I will be starting to discuss all the topics related to the chapter Metallurgy in Standard 10 ICSE Chemistry. Without wasting any time, let us straight get into the chapter and try to understand the topics related to the chapter. So, what are we waiting for? Let's get started. Our topic of discussion would be मेटलर्जी। मेटलर्जी है क्या और इसमें हमें क्या क्या चीज़ जानना है। ओके, सो वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से सुन के इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियोस। समझते हैं मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स कोर। आप लोग जानते हो कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, एंड देन वी हैव द नोबल एलिमेंट्स। तो मेटल को हम लोग एक ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको मिलाकर हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। सो वी हैव एन ओर एंड फ्रॉम द ओर वी आर गेटिंग द मेटल। ओके, all the processes that are involved in this, okay, ये मेटल का एक्सट्रैक्शन करने में जितना भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होगा सबको मिलाकर हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। सो बेसिकली इट्स द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, all the processes that are involved in the extraction of metal from its ore. What is a ore? Ore is basically a mineral. Ore is basically a mineral from which the metal is extracted profitably. कोई भी मिनरल से जब एक मेटल को आप लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसी को आप बोलते हो ओर। सो इन दिस केस यू कैन से ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। वंस अगेन आई रिपीट, ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। तो क्योंकि आपके सिलेबस में है मेटलर्जी, आपको जानना है कि हम लोग एक मेटल को उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। There are several steps of extractions. It's not that you dig the ground, you get the ore, you wash it, you get the metal out of it. Because the most reactive metals which are placed at the top of the activity series. I'm sure you have read about the activity series. You have a potassium, calcium, sodium, which are actually placed at the top, isn't it? And then we have the least reactive metals like gold is there, silver is there, okay, platinum is there. These least reactive metals, basically they are found in their native state. They are found in their native state, यानी कि इनके लिए अलग से कोई और नहीं है, ये बेसिकली नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। पर रिएक्टिव मेटल्स जो कि ऊपर है, जैसे यू विल बी हैविंग एल्युमिनियम, आल्सो यू विल बी हैविंग जिंक, एक्सक्यूज मी। तो ये सारे जो मेटल्स है, दिस मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। दे विल नॉट बी फाउंड इन देयर फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। तो क्योंकि ये फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में पाए नहीं जाते हैं, ये एक और फॉर्म में रहते हैं, दैट मींस इन द कंपाउंड फॉर्म। You will have to extract that metal from its compound. So आपको जो भी processes इसमें apply करना होगा, वो सारे processes को metallurgy कहा जाएगा। मसलन for example, you have aluminium which exists in its ore, and the name of the ore of aluminium is bauxite. Okay. So you have to extract aluminium from bauxite, and in this process, whatever we will be doing from first to last, all the processes will be collectively called metallurgy. Now the thing is, whether it is aluminium, whether it is zinc, whether it is lead, whether it is sodium, whether it is calcium, whatever metal you are extracting, there are some common steps of extractions. What are the common steps of extraction? Let us learn in this video.
उसके बाद in coming videos I will be discussing about all the steps. So first, तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मेटल चाहे कोई भी हो, अगर वो अपनी कंपाउंड फॉर्म में है, अपनी ओर फॉर्म में है, तो उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे उसको टोटली बोलेंगे मेटलर्जी. सो दैट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज that will be involved in extracting the metal from its ore. Now, you know there are different types of ore like iron ore, hematite or magnetite, you have galena, you have zinc blend, you have bauxite. Okay, bauxite is in your syllabus, which actually is the ore of aluminum. तो ore चाहे कुछ भी हो, आपको हर एक ore के साथ ये प्रोसेसेस को अप्लाई करना है. तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा. Whatever metal it is, we have to apply this process. So, the steps in metallurgy. First thing that you have to go is crushing or grinding. Okay, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, यानी कि जो पहला स्टेप है वो आपको क्रशिंग या ग्राइंडिंग करना है. दैट मीन्स आपने जो ओर को निकाला मिट्टी से, उस ओर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स यू विल टर्न इट इनटू अ पेस्ट और अ पाउडर फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल बी फॉलोइंग फॉर एनी ओर, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. Then you take the crushed or grinded ore. ये जब आपको मिल जाएगा, you will have to go for the second process, and the second process is called concentration of the ore. Now, what do we mean by concentration of the ore? The thing is, the ore that we have taken from the earth's crust might be having several impurities, mud, dust particles. Impurities in the sense there might be other elements, other compounds present in it. इसमें अलग से मान लीजिए this is a bauxite ore, aluminium ore, bauxite. Now in this particular ore, apart from having aluminium, it can have titanium oxide, it can have sand present with it, along with mud and dust particles. तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें से जो भी impurities है इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं. Okay, so our first attempt will be to remove the impurities present in that ore, and that process is called concentration of the ore. Now, based on the kind of ore that we are concentrating, there are 4 different states of concentration. Number 1, you can go for magnetic separation. Magnetic separation. You can go for froth flotation. You can go for hydraulic washing. Or you can go for the chemical process, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं. Got it? So these are the 4 ways of concentrating the ore. Okay, यानी कि to remove the impurities that are present in the ore, you have to apply any one of the process based on the kind of ore you are using. Suppose if it is a magnetic ore, I mean iron ore. Okay, so iron ore can be concentrated by the process of magnetic separation, isn't it? In the same way, there are other processes as well, and then we can go for the chemical process of leaching also for some of the ore, reactive ores, you can say. Now once you get the concentrated ore, मान लीजिए आपको concentrated ore मिल गया, you have taken the ore from the earth's crust, you have crushed or grinded it and grounded it, and then you have undergone the process of concentrating the ore and you got the concentrated ore. अब जब concentrated ore हमें मिल गया, यानी कि the ore having less impurities, जब हमें वो concentrated ore मिल गया, तब हमारा next step क्या होगा? What would be the third step? After crushing and grinding, concentration of the ore, the third step that we will be following. The third step that we will be following is
changing the ore into its oxide form. यानी कि उस ओर में जो भी मेटल है उसको उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंजिंग या फिर कन्वर्ट करना है. सो फॉर एग्जांपल ZnS है, जिंक सल्फाइड, इसको मुझे ZnO करना है. ओके, लेड सल्फाइड होगा, PbS मान लो तो उसको PbO करना है. इसी तरीके से जो भी ओर रहेगा, एल्युमिनियम ओर रहेगा, ओके, तो एल्युमिनियम ओर को हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदलना है, तो जो भी ओर कंसंट्रेटेड होगा वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म. Changing or converting, okay, rather if you have a problem with this word you can use the word converting the ore into its oxide form. Now to convert the ore into its oxide form you can apply any of the two processes. One is called roasting and the second one is called calcination. So you can apply the process of roasting or calcination to get the oxide of the metal present in the ore. Roasting is actually heating the ore in excess of air, and calcination is heating the ore in limited supply of air. तो जनरली कार्बोनेट ओर जो भी होते हैं उनके लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं और रोस्टिंग यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, ores which are present in the sulfide form. There we will use the process of roasting, and for carbonate ore we go for calcination. Once again I say calcination means heating the ore in the limited supply of air, whereas roasting is heating the ore in excess of air. So by heating the ore, okay, whether by the process of roasting or calcination, we are getting the oxide of the metal. Now after getting the oxide of the metal, what is the fourth step that we are going to follow? The fourth step is, I'm writing here so that you understand. Suppose I have zinc oxide or I have aluminium oxide. Okay, so the next step that you will follow for all the ores, all the metallic oxide, is removal of oxygen. You have to remove this oxygen because ultimately our aim is to get the metal, right? So we have to remove the oxygen. Removal of oxygen in chemistry is called reduction. So we have to go for the process of reduction where we will be removing oxygen and getting the ore. Okay, and after we get the ore, what we have to do during the process of reduction, आपको तो ore metal मिल ही जा रहा है, you are getting the metal, and then in the fifth step you will go for the purification of the metal. Okay, this is the last step where you are getting the purified metal from its ore. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, as you have seen that from any ore we can extract the metal, but for extracting the metal from the ore we have to follow certain steps, और चाहे कोई भी हो. What are the steps? First, we are crushing or grinding the ore. That means we are making it to pieces, and after that the crushed ore is concentrated. Means concentrating the ore means removing the impurities that is present in that particular ore, and we are concentrating the ore by the process of magnetic separation, hydraulic washing, you can go for froth flotation, or the chemical process of leaching. I didn't discuss them in details, I just told you about the process because this video is basically speaking about the steps in metallurgy. मैं अलग अलग करके सारे चीज़ों को वीडियोस में डालने की कोशिश करूंगा, तो आने वाले वीडियोस में आप लोग जरूर जानना कि ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. Okay, so the first thing is crushing or grinding the ore. Then we are going for concentrating the ore. We are taking the concentrated ore and changing it or converting it into its oxide form. Okay, we are changing and converting it into its oxide form. After we get the oxide of the metal, we are going for reduction. Reduction means removal of oxygen. So when we go for reduction, we are getting the metal, and then we are purifying the metal. This is the last step in metallurgy for any metal. Now in ICSE Standard 10, these entire processes are explained with the help of one example, that is aluminium.
Okay, so you have extraction of aluminium, and you will get to know what are the steps involved in the extraction of aluminium. How is aluminium extracted from its ore? And the name of the ore of aluminium is bauxite. So, in my next video, I will be discussing about the extraction of aluminium from its ore, bauxite. Till then, take care, and I hope you have learned a little from this video. If you have enjoyed it, please like the video and subscribe the channel. Thank you so much. Have a lovely day.